Yeah, good morning, everybody. So lots of geopolitical concerns चल रहे हैं. आप न्यूज़ देख रहे हो, मीडिया देख रहे हो. In that context, देखते हैं what lies ahead in the market. Yeah, daily trader, good morning. Yeah, Nanavati ji, good morning. Great to see you all on a daily basis. So before we start, I'll read out the disclaimer part. So this is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. So let's see what the plan is for today. बहुत ही एक केओस है, कंफ्यूजन है ट्रेडर्स के माइंड पे. क्रूड 10% ऊपर था, निफ्टी गिफ्ट निफ्टी ओपन डाउन रिकवर्ड. सो एक वॉलेटिलिटी का फेज रहेगा आज मार्केट में, दैट्स वेरी वेरी क्लियर. Such markets on first day when it reacts to a geopolitical event, there एक uncertainty का एक element always रहता है. So you are going in the market with a element of uncertainty. So let's go and check the broad markets. So just give me a minute. Yes, friends, we are back. I forgot to plug in my charger. So सबसे पहले मार्केट्स में जाते, दे आर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, रीड आउट द हेडलाइंस. देखते ग्लोबली क्या हो रहा है, हाउ ऑल द मार्केट्स हैव रिएक्टेड. शर्मा जी गुड मॉर्निंग. या हरप्रीत गुड मॉर्निंग. सो एशियंस हेडलाइंस बता रही है, एशियन स्टॉक स्लाइड एज यूएस ईरान स्ट्राइक्स बैटर रिस्क. तो एक ईरान का जो कंसर्न चल रहा है विच इज देयर. So nothing has ended. The bombings you are seeing is going on. So that plays on the traders' mind कि uncertainty का माहौल है मार्केट में. फ्यूचर्स देख लेते हैं और एशियन मार्केट इट इज गेटिंग लोडेड. सो यूएस फ्यूचर्स अभी डाउन है अराउंड. नो, दिस इज नॉट फ्यूचर्स, दिस इज एक्चुअल. सो लेट इट गेट लोडेड, थोड़ा टाइम लग रहा है. यस. So we'll go to the charts also. We'll see where our support is. क्या important levels break हुए कल on a Friday, which is the last trading sessions, and so on. So अभी की तारीख में फ्यूचर्स 400 पॉइंट नीचे यूएस के. अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो इंक्लूडिंग यूरोप एंड ऑल द मार्केट्स रेड में आपको दिख रहे हैं. बोवेस्पा जो मेटल्स है is down 2,500 points. Hang Seng is down 500. Nikkei is down 1,000. So no doubt about it, uncertainty का माहौल है in which all the markets are cooling off, coming down and seeing a decline. So हम XGX निफ्टी देख लेते क्या चल रहा है अभी. सॉरी, गिफ्ट निफ्टी. XGX दिमाग में बैठ चुका है. So the gift nifty आज खुला था डाउन. But if you see from this low, which was close to the budget low, it has recovered. So this recovery is, let's say, more of a short covering, or it was too low, it was oversold. So Gift Nifty is suggesting a gap down opening, and it's quite clear कि आज gap down opening रहेगा. But on the daily charts, what as a trader you have to keep in mind is that market ने 200 DMA तोड़ चुके हैं. So I'll just plot your 200 DMA. So market has breached the 200 DMA. So abhi market ka this is like the key level. Till it's not crossing this, we would consider the trend as down. And अगर आप देखो तो लास्ट एक हफ्ते से हम बोल रहे हैं कि ट्रेंड में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपायरी है. आई टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम शेखर. शेखर जी कह रहे निफ्टी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 24,800 इज वॉलेटिलिटी स्क्यू पॉइंट. It should act as a support. See, देखिए, all the data are in isolation of the geopolitical concerns or situation which is evolving. Fine, शेखर. अभी हमें मार्केट को सपोर्ट लेवल्स, क्यू लेवल्स, ओआई लेवल्स all have to combine together given the events. Is it okay, शेखर? Don't stand alone. कोई भी डेटा अभी मत देखो, at least for a day or two. So this is Nifty 200 day violate हो चुका. So we know that 25,330
from here on is going to be a very strong level. And as you suggest, we have been following this channel, and हम बोल रहे थे मार्केट में एक प्रेशर जो स्ट्रांग है, सो चैनल लो टेस्ट किया, टुडे इट्स ब्रोकिंग, सो ये चैनल लो का भी देयर इज नो रेलेवेंस. नाउ द रेलेवेंस इज दिस लो. और एक चीज मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक आता है, विच वॉज, अगर आप पैनिक लेवल्स देखो, तो मार्केट ने ऑलवेज वो पैनिक लेवल के सपोर्ट से एक रिकवरी दी है. गेटिंग माई पॉइंट? So again, the same way, the budget low was identical of what happens in a stage of panic. तो बजट का लो था. तो हमने ऑलवेज देखा है कि ये जो लो का जो सपोर्ट बन रहा है, द एक्सट्रीम लो एंड द क्लोज, so this is acting as a support level. Please note down this levels and formation. This is what market ने हमें previously बताया और हम उसको follow कर रहे हैं. Everybody noted it down. So अभी मार्केट में with this as a support and 200-day moving average 25,362, so which is मैं लिख देता हूँ 25,365 कर देता हूँ राउंड फिगर. तो ये लेवल के बीच में मार्केट रहेगा एंड द इमीडिएट प्रेशर विल बी ऑन द डाउन साइड टू टेस्ट दिस सपोर्ट. नोट डाउन द लेवल्स, नोट डाउन द पैटर्न्स. और प्रीवियसली देखा गया है कि जो पैनिक लो रहता है मार्केट्स में, जब एक रिएक्शन आता है, सो इट्स जस्ट बाउंसिंग ऑफ फ्रॉम द पैनिक लो. सो हम ऊपर और नीचे दोनों का एक लेवल्स डिफाइंड है मार्केट में एज ऑफ टुडे. सो नीचे का लो इज 25,558 विच वाज द बजट लो. और राइट नाउ आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी दिखेगी ये जोन में 25,365 एंड 24,500 level. Keep these two levels in mind. And Shekhar ji, 24,800 to me looks it's a support. Yes, this zone, sir. Now is your question answered, Shekhar ji? That's what we are doing it right now. And एक बार geopolitical concerns में एक range बन जाता है with a downward bias in the price, volatility do surface. Just keep that in mind. There are no micro levels in the index. So let's go to the OI distribution part. Lots will change. अगर आप OI भी देखो ना, तो फ्राइडे के क्लोजिंग पे कॉल में 24,92 करोड़, लगभग 25 करोड़ का कॉल राइटिंग था एंड OI belongs to the writers और पुट में 11 था. So that was that traders had position in context of option writing on a bearish note, which means there was more OI in calls. But अगर आप, yes, so that was Nifty. और एक्सट्रीम पे अगर आपको OI पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, so let me just scroll it a bit. So which is around 25,000. Looks this level might go away today, and then 24,500 का एक level है which is matching with our this thing. So volatility will be part of the market setup. We can't avoid that. So now let's go to Bank Nifty. See, Bank Nifty अभी भी 50 DMA के ऊपर है. So Bank Nifty हम देखते हैं relatively Nifty से ज़्यादा strong है because Nifty करीब करीब ये gap भर चुका है या भरने वाला है आज, but Bank Nifty is way up above this. So Bank Nifty panic में आपको 50 DMA का levels you have to keep in mind. So जो 50 DMA का जो level है Bank Nifty में वो last low के आसपास आ रहा है. और ये जो बेस था, दिस बेस इन विच बैंक निफ्टी हैड क्रिएटेड, ये बेस से 2 बार बाउंस किया मार्केट्स. कीप दिस इन माइंड. सो फ्रॉम दिस बेस मार्केट्स हैव बाउंस्ड twice. So I'll take a question from Sankar. Says 25,360 will be a resistance. Now absolutely 200 DMA एक बार वॉयलेट हो जाता, we have to accept शेखर जी कि जब तक उसके ऊपर नहीं जाता मार्केट, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता मार्केट prices को. So this is the Bank Nifty. So far Bank Nifty ने ये बेस वॉयलेट नहीं किया एंड 50 DMA भी यहीं पे. तो बैंक निफ्टी में आप 59,600 का which is again 1,000 points from the current levels का एक सपोर्ट बन रहा है. So declines में Bank Nifty is likely to come and test over here.
और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो जो ट्रेंड की हम बात करते हैं, ट्रेंड अभी डाउन हो चुका है ऑन द डेली प्राइस चार्ट्स। मीडियम टर्म कंसोलिडेशन है, बट शॉर्ट टर्म डिक्लाइन वाज ट्रिगर्ड ऑन फ्राइडेज। the moment last low it breaks, last low टूट जाता है, then we say that the trend is down because that's what we call the price pattern. So ये lower high बन चुका and this low was violated. So in a downtrend, generally we come and test the last support. So that's the bank nifty price charts, and bank nifty is relatively stronger. So ये support band जो 50 DMA के साथ clubbed है, इस पे आप ध्यान दो. On the dips and the declines, market is likely to come and test this levels. सो दैट वाज बैंक निफ्टी. अभी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, एक बार फर्स्ट टाइम जब ट्रेंड डाउन होता है, प्राइसेस डू टेक अ शेप ऑफ अ चैनल. सो अगर आप प्रीवियसली भी देखो, द फर्स्ट डिक्लाइन क्रिएट्स अ चैनल. इसका एडवांटेज हमको वही है कि देन वी नो व्हेन द नेक्स्ट अपस्विंग स्टार्ट्स, ओनली ब्रेक ऑफ द चैनल. सो राइट नाउ द मोमेंट डाउनस्विंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो लोअर हाइज मिल जाते हैं, तो ऑल आपको ट्रेडर को करना है is connect both the highs, that's it, and extend the line and redraw this. So this is the channel on bank nifty. Everybody clear about this channel? एक बार channel दिख जाता, when we see a channel, then prices stays in the channel till it does not break either side. जैसे निफ्टी में channel two, the pre-opening is showing that the channel is breaking. So it guided us that जब तक channel high नहीं निकल रहा, I'll just mark with an arrow, the bias in the price is down. आइदर ये चैनल के बीच में रहेगा और आपको एक वॉलेटिलिटी रेंज भी मिल जाती है. अगर मैं चैनल को एक्सटेंड करता हूँ फुल, तो इज क्लोज टू 2%. तो बैंक निफ्टी में एक 2% की वॉलेटिलिटी आप लेके चलो. So I have a question from Shekhar ji, says Bank Nifty 61,000 C is high, so less be written. Will, yes, you are absolutely right, Shekhar ji. Will come to it. So अगर आप बैंक निफ्टी का ओआई डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, तो सी बैंक निफ्टी अगर आप पीसीआर चेक कर रहे हो, तो ऑलवेज लास्ट 2 वीक से बैंक निफ्टी हैज बीन पॉजिटिव. तो बैंक निफ्टी अगर ओआई का कॉल देखिए तो एक 1.02 करोड़ है, पुट का भी देखिए तो 120 करोड़ है. सो उसका जो पीसीआर है वो 1 आ रहा है, विच मीन्स इक्वल कॉल एंड इक्वल पुट्स. तो किसी ने आज फ्राइडे तक बहुत जोर से राइटिंग का आइदर साइड डायरेक्शन नहीं था, इट वाज न्यूट्रल और आई वुड कॉल बुलिश. बट टुडे थिंग्स कैन चेंज, वी हैव टू ट्रैक द डेटा. और यस, सो बैंक निफ्टी में अगर आपको ये टावर देखना है तो 60,000 है शेखर जी, यू आर राइट. नो, इट्स 60,000. पुट्स में हाईएस्ट ओआई अभी जो दिख रहा वो 60,000 पे, which is 500 point from the current levels. तो यहाँ के आसपास आके आपको चार्ट्स का डेटा also we have to keep. So this was 59,500 50 DMA. Channel low is 60,000. So 60,000 से लेके 59,900 का एक सपोर्ट बन रहा बैंक निफ्टी में. Let's see how it's reacting, holding at or around the levels. So that was Bank Nifty. Shekhar ji, is your question answered? Sir, आपको charts का data, जिस what we call price action, and OI का data, which is a sentiment indicator, as a short term trader, as a day trader, आपको दोनों को combine करके decision लेना. किसी को ज़्यादा weightage मत दो, give equal weightage, and then with the risk management in place, define your strategies. Was it clear, Shekhar ji? That's what trading is all about. Trading का मतलब ही वो ही है, दोनों डेटा हम कंबाइन करके एक लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं. So now if I put both the charts together for your trade plan part of it, या विक्स देख लेते हैं. विक्स भी हमने देखा था कि विक्स एक रेंज में था. So मैं विक्स इंडेक्स ओपन करता हूँ, which is विक्स इंडिया. Just give me a minute, charts are getting loaded. ये विक्स आ गया. अगर विक्स की भी हम बात कर रहे हैं तो एक रेंज विक्स में डिफाइन था, और विक्स अगर आप देखो तो ये रेंज का सपोर्ट लेके ऑलरेडी स्पाइक आ रहा था और ये ऊपर का डायरेक्शन था. तो विक्स भी दिखा रहा था कि एक डाउन स्विंग का जो माहौल है वो अभी रिवर्सल के मोड में नहीं है.
So VIX is likely to go and test somewhere around this levels. वहाँ से देखते अगर pull off आ रहा है, then we can expect a pullback or a bounce in the market. Right now, though, there is uncertainty and it is being captured in the price, and volatility will be order of the day. So आपको ये दो चीज मान के चलनी है. तभी मैं साइड बाय साइड दोनों चार्ट्स आपके प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन कर दे रहा हूँ. और ये जो लेवल्स मैंने लिखे वो 200 डे मूविंग एवरेज के लेवल्स है, उसको आपको ध्यान रखना है. एंड और मैं एक बैंक निफ्टी भी साथ में कर देता हूँ, बिकॉज दैट्स द टू इंडेक्स विच ट्रेडर्स आर ऑलवेज वाचिंग एंड ग्लूड अपॉन इट. तो मैं डेली पे कर रहा हूँ. देखिए, मैंने बोला एवरेज को आप छोड़िए मत. निफ्टी में ऑलवेज 200 डीएमए का एक डिसीजन मेकिंग लेवल्स आ रहा है, एंड बैंक निफ्टी में वो जो लेवल है वो 50 आ रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज का. जब भी भाव 50 डे को मीडियम टर्म मूविंग एवरेज बोलते हैं और 200 डे को लॉन्ग टर्म बोलते हैं. सो ये एक हिट आ सकता है, आप इसको अपने ट्रेड प्लान में नोट करके रखिए. और सपोर्ट लेवल्स एज ऑफ टुडे, अ पैनिक सपोर्ट इज डिफाइंड इन दिस रेंज, बिकॉज ये सपोर्ट के साथ आपका 50 चल रहा है. So this is the plan for the day. Act accordingly. Panic declines are likely to come and test this level. Interesting रहेगा ये देखना कि ये लो टूट रहा है. Previously panic lows had provided supports on its way down when जब मार्केट में एक नरमी का दौर चल रहा है. तो so don't overreact to the news. अगर आपको लग रहा है कि I am not able to get a trade, I am not, volatility is too high, एक दिन शांति से बैठ जाओ. That should be the best. See, बहुत बार ऐसा होता है, the best risk management is to keep quiet. So कभी कभी ऐसा दिन आता है ट्रेडर के करियर में कि for a day he can take a break and he said today I'll not trade. So जब आप बोलते हो today I'll not trade because of the uncertainty in terms of geopolitical concern, वो जो प्रेशर रहता है ट्रेडिंग का, that just goes away. फिर एक अच्छा सा cool trade आ जाता है. So make sure you go that. Market is 3% down. Sensex is 8% down. Pre-opening में yes, it is possible. So 3% down, 8% down. Let's go and check whether pre-opening rates. Yeah, 3% down. वो बजट के लो के दिन ही आ रहा है. So that's what. आप ही देखो कितना एक्साइटमेंट है आप में, कितना नर्वसनेस भी है, सब यही चेक कर रहा मार्केट कितना नीचे जाएगा. So all the traders are in a mindset which is what we call uncertainty and fear in spite of not having trades also. So ये बताता है how closely we are glued to the market in context of the downside opening. So that says I don't have a very cool and calm mind today when market is about to open. If I don't have a cool and a calm mind, let me be quiet for first hour. Does it make sense today? That should be part of your trade plan. कि आज मैं मौन व्रत में चला जाऊंगा एक पहले घंटे के लिए और फर्स्ट 15 minutes. So that's how you should plan it. There are days where you have to be quiet. Today is one such day in which you have to be quiet for the first hour. Observe the price. Let not there be any excitement, any panic. What क्या होगा, कैसे होगा? Let price come down to the support, and then we observe what's happening there, and let's see how to take it forward. So that's all from my side. Before I end, I'll read out the disclaimer. So we have done the pre-opening on 2nd March. So the disclaimer is this is for educational and informational purposes only, and it does not constitute a financial advice. So I leave you with the plan, and make sure everything is there in front of you, the levels, the averages, where the decline is likely to go into. And अगर आपको डिटेल में चाहिए, so you can go to a Substack note in which I have trading with Stockholm. You'll get the details. So that is the weekly note. How many of you get into the habit of reading it? See, the morning sessions, the evening sessions, and the technical note on the Substacks are all part of our community. So make sure you go through it. Right, so the week ahead, I had written down clearly Nifty closes below the 200-day moving average. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day.